in this class we will learn the separation of the structure from the style. Why it is very necessary to separate the structure or the content from the design. Okay, so here to enhance the performance of your HTML, we separate the content in one section and design in one section. Okay, so we learn the disadvantages of HTML, that if we write the tag again and again, then the program will be lengthy and it is difficult to design the page by using a number of tags. Okay, so for that reason we are using here the cascading style sheets or any framework or javascript आप ये सब use कर सकते हो. Okay, so we will learn that cascading style sheets. So separation between the HTML structure and the cascading style sheets style. Okay, so by clearing separating the content and design, HTML में क्या हो रहा था ना, it add those two things, that is your content plus your design combinedly वहाँ पे आता था. So it's quite difficult for you to using the tags and design the web pages. Okay, so it makes you simplify your work, that when you use some style sheets, that is your cascading style sheets or any framework, so we create a document with a structure very marked logic, so everything that belongs to the content can be clearly identified as such without the need for some auxiliary measures, and the document in turn so is perfectly understandable regardless of its visual representations. For that reason, here we are separating the content and the representation part. Okay, so another thing is that uh, why we are separating it to better manageability. Okay, that is mentioned that perfectly understandable regardless of its visual representation, so it will be easier to manage these documents and reuse the same styles in multiple pages आप use कर सकते हो. Okay, reuse the same styles in multiple pages. Okay, so what does CSS stands for? I already tell you that it stands for your cascading style sheets, and it describes how HTML elements are to be displayed on your screen, paper, on in other media. So CSS saves a lot of work and it controls the layout of multiple web pages all at once. So external style sheets are stored in CSS files. Okay, there are different types of style sheets: inline style sheet, internal style sheets, and your external style sheets. I will tell you in details in your next class. Okay, so what is CSS? So it stands for your cascading style sheets, or you can say it that it is the code or the document or some styles which define the design or layout of the view of the web pages, and it specifies a number of style properties. Okay, and the next thing is that here why we use the cascading style sheets is the cascading style sheet is used to define the styles for your web pages, including your design, layout, and variations in the display for different devices on and the screen sizes. Okay, so as I have already told you that it is platform independent, your HTML is platform independent, that in each web browser you can run it. So what you need that rather using this tag again and again, you have to use the cascading style sheets, so it will be easier for you. You just add the style sheets in this HTML document and you run it. A simple example for you, that here
this is the comment here, and HTML tag starting, then head, then you have to use the style tag, then body. In body you have to give the background color जो भी देना है, you can give it a blue, red or orange, whatever. Okay, if you know the code then of the color, then you have to mention that color also. And here in here you can see that you are giving the h1. तो देन हियर व्हाट हैपेंस, कलर यू गिव, देखो यहाँ पे एक अलग चीज टाइप का लिखा हुआ है, एंड हियर द कलर वाइट होगा, दिस वन बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है यहाँ ब्लू, एंड दिस कलर इज मेंशन हियर वाइट, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर में रहेगा, आप लेफ्ट में रहे हो. देन दिस इज फॉर द पैराग्राफ, आपका जो रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा, दैट इज योर फॉन्ट फैमिली, मतलब what will be your font type, then font size. So ending of the styles and head, the body part, and h1 tag आप use किए हो, so it will show you the larger size. then paragraph में आपका लिखा हुआ है learn CSS. okay, then ending of the paragraph, then body, then HTML. okay, so here you see this is the simple example for you. if you run it in the notepad, so notepad में write this once a minute. here in the notepad, just see this is the that same code I have written here, and I save it with the name of css.html. just run it, it will show you this type of page. And if I change this color, suppose I am giving here pink. okay, just save it and run it. okay, it comes to pink color. okay, so यहाँ पे क्या होगा ना, अगेन एंड अगेन वो उसको रन करके लेंदी वन बाय वन सेम टैग को अगेन एंड अगेन कॉपी पेस्ट करके लिखने से अच्छा है यू यूज़ वो क्या हेल्प कर रहा है ना आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट में. यू जस्ट यूज और री यूज दैट सेम कोड जो आप लिखे हो, उसको आप मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हो. ओके, अदर थिंग इज दैट कि अदर एडवांटेज ऑफ CSS and why we use CSS, that we have mentioned here that it is mentioned here that content and design will be separated. So when this content and your design अगर सेपरेट हो गया, so whenever I want to change the content, then it is easily I can change it. and design में अगर मुझे कुछ changes करना है तो I can easily change it. but HTML only, सिर्फ HTML में क्या होता था ना, they both are combined with each other. HTML, okay, they both are combined with each other, but now here we separate this. okay, so if I made any changes in this content, then it will not reflect to the design. and अगर मैंने design में कोई change किया, then it will not reflect to your content. so और एक चीज है कि we can use it or reuse it in multiple times. हम लोग वही कोड को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं. ओके, सपोज मैंने एक डिज़ाइन बनाया एंड आई वांट टू रीयूज दिस पेज. सो जब हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट का बात कर रहे हैं, तो ये जो स्टाइल को हम एक अलग ये नेम में सेव करके रख रहे हैं, दैट इज .css, एंड जो कंटेंट पार्ट है उसको अलग तरह से सेव करके रख रहे हैं. मतलब हम लोग HTML कंटेंट को अलग तरह से सेव करके रख रहे हैं, एंड जो भी स्टाइल्स है दैट इज़ योर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और .css उसको हम लोग अलग तरह से सेव करके रख रहे हैं. ओके, एंड वी ओनली
add these styles in your HTML document. Okay, so here this is the आपका होता है जो बोली मैं inline style sheets, internal style sheets and आपका external style sheets. So here external style sheets में आप only you have to do the external style sheets are stored in your CSS files. So you only add the CSS files into the HTML document. Okay, here the content. ओके, सो ये कंटेंट में मुझको अगर रीयूज़ करना है वही कोड को, एंड अलग कोई कंटेंट है, सपोज 2 कंटेंट मैं बनाई हूँ बट आई वांट टू अप्लाई और इम्प्लीमेंट दिस डिज़ाइन इनटू दिस 2 कंटेंट्स. सो नो नीड to create separate design for this content and this content again मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो मैं जो भी डिज़ाइन बनाई हूँ उसी से यही सेम डिज़ाइन को मैं इस कंटेंट के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, इस कंटेंट के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ. ओके,